चलो भाई, we are leaving from Udaipur to Jodhpur. We will stop at Kumbhalgarh Fort, which is 2 hours ride from Udaipur. So Udaipur तो बहुत अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। वेदर अच्छा था और हमारी किस्मत अच्छी थी कि वेदर अच्छा था, तो घूमा हमने कल को। तो अभी निकल रहे 2 घंटे में कुंभलगढ़ फोर्ट, देन वहाँ से 3 hours राइड वी हैव जोधपुर। तो जोधपुर में हमारा स्टे है, फिर हम कल निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। तो दिन बाय। कुंभलगढ़ फोर्ट वेरी ब्यूटीफुल। कुल्लूगढ़ की दीवारें। थर्टी 38 किलोमीटर्स का ये फोर्ट है पूरा राउंड में। इधर को वाइड दिस साइड और वाइड दिस साइड नहीं हो रही कुल्लूगढ़ की दीवारें। इसमें का सर्कल पूरा कितना बड़ा है वो भी इसके अंदर ही आता है। मुझे दिख रहा है कैमरा on the top of the Kumbhalgarh Fort। ऐसा ही स्लोप था बस, और आप ऐसे घूम के आए और मैं किला फतेहगढ़। हर हर मैदान फतेह।
inside fort. Just come inside fort. ओल्ड टेम्पल, कौन सा जैन टेम्पल है क्या? हाँ ये जैन टेम्पल है, वेदी कॉम्प्लेक्स। जा सकते हैं ना ऊपर। कृपया दीवारों पर किसी प्रकार का लिख न करें। किसी प्रकार। हाँ। We're coming from that top to this temple, Devi complex. बहुत पुराना है ये। इसी तरह का स्ट्रक्चर उधर भी बना है। So now we are going to the Great Wall of India. Charges are around 100 rupees per person, and rest of the charges like camera, accessories, other things will go on increasing. तो हमने कैमरे के चार्ज नहीं लिए थे, तो हमने वीडियोस नहीं बनाई है, बस केवल फोटोज क्लिक करी है। और अच्छा है, बहुत ही मैग्निफिसेंट है, पूरा हिल टॉप पे बना हुआ है, मतलब सिटी बनी है, सिटी कैंप। All the houses are painted in blue. So that's the Kumbhalgarh Fort. So overall it's a good experience. Yeah. It's a must visit in Jodhpur Wildlife Park. One of the best forts. Rajasthan. So one update is that हम उदयपुर से जोधपुर आए हैं। बीच में कुंभलगढ़ फोर्ट गए थे, कुंभलगढ़ सॉरी। तो टिकट्स अराउंड 6 घंटे सड़क और पाली के बाद से पाली के बाद टिकट का है थकावट बहुत। Now it's time to eat something and chill at something or something. chill at We're leaving from Kumbhalgarh Fort to explore the Jodhpur city.